Hello students, I am Ankur Khandelwal, your maths teacher. Hello students, in today's class we are going to discuss the topic maxima and minima. Before starting this topic, I just want to tell you what are the things that we are going to discuss here. We will be taking all the concepts that are there in maxima minima. Four varieties we'll discuss. The first variety, maxima and minima without using differentiation. Second variety, maxima and minima using first order derivative test. Third is maxima and minima, absolute maxima and absolute minima. And fourth is the word problem. And उसके बाद next fifth video में, आज वीडियो बनाने वाला हूँ इस टॉपिक के, fifth video में will be putting some questions of word problem that are from examination point of view. ऐसा भी possibility है, word problem में 2 से 3 वीडियो भी बन सकते हैं. Means इस टोटल इन सारे वीडियोस को आप लाइन अप देखेंगे so you will be able to understand this maxima and minima concept very easily. One more thing that I want to tell you, that many students find difficulty in solving questions of maxima minima. You just watch my video, complete video every day I will be putting on video. In 5 days, after 5 days I will tell you that you will be definitely able to do this topic. One more thing, in this topic, in previous year examination question paper, if we see one questions of 6 marks, examiner asked from this topic. So this is very important. So let's start. Here I have taken a function, and for this function we want to understand what do we mean by maxima, what do we mean by minima, what is local maxima, what is local minima. Each and everything we are going to discuss here. Right? Now just observe this function. If you take any interval, suppose मैं इस फंक्शन को a से b इंटरवल के लिए ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मींस इस इंटरवल के बीच में इस फंक्शन का नेचर क्या है, कब मैक्सिमा होगा और कब मिनिमा होगा. तो बेटा यहाँ पे देखना कुछ पॉइंट्स को, जो टॉप पॉइंट्स हैं इनको नाम में दे रहा हूँ पीक्स, P1, P2, P3. P I am denoting peaks, and the bottom points, bottom turning points, I am naming V1 and V2. V is for valley. Right? अब आप इस क्वेश्चन को देखो, चाहे पीक पॉइंट्स हो या वैली पॉइंट हो, फंक्शन टर्न कर रहा है. जब हम पीक पॉइंट्स की बात करते हैं, दिस पॉइंट इज मैक्सिमम अबाउट इट्स नियर बाय पॉइंट्स, इसके आसपास के पॉइंट्स से ये मैक्सिमम वैल्यू है. सेकंड P2 के लिए भी बात कर सकते हैं, P2 इज आल्सो मैक्सिमा अबाउट इट्स नियर बाय पॉइंट्स. V1 इज मिनिमा अबाउट नियर बाय पॉइंट्स. नियर बाय पॉइंट्स बोल रहा हूं, मींस आई एम टॉकिंग अबाउट लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा. V2 इज आल्सो मिनिमा अबाउट द नियर बाय पॉइंट्स. राइट? तो V2 को भी बोलूंगा लोकल मिनिमा, V1 लोकल मिनिमा, P1, P2, P3 are local maxima. Local maxima and local minima are what? Local maxima is a point at which function attains the maximum value about its nearby points, and minima में attains the minimum value about the nearby points. Overall minima की बात करेंगे तो आप इस इंटरवल में देखोगे 2 मिनिमा है. जो लीस्ट वैल्यू आएगा वो ओवरऑल मिनिमा हो जाएगा, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगा वो ओवरऑल मैक्सिमा हो जाएगी. एक चीज और हमें समझना जरूरी है, देखो इस मिनिमा की वैल्यू V1 की और P3 की, आपको दिखेगा मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से ज्यादा है. लोकल मिनिमा कैन बी ग्रेटर देन लोकल मैक्सिमा, इट इज आल्सो पॉसिबल. राइट? नाउ इन ऑल दीस पॉइंट्स इफ यू ड्रॉ अ स्लोप बनाते हैं, फिर हम बात करते हैं. P1 पे स्लोप बनाया मैंने, V1 पे स्लोप ऑन P2, स्लोप ऑन V2, स्लोप ऑन P3. In all these points, if you observe here, slope, tangent is parallel to x-axis. Slope is parallel to x-axis, and whenever a slope is parallel to x-axis, then dy by dx is 0. So whenever we need to find the turning points means local maxima or local minima. What we are going to do, इस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव 0 से इक्वेट करेंगे, और 0 से इक्वेट करने के बाद
जो भी पॉइंट्स मिलेंगे वो हमें टर्निंग पॉइंट्स मिलेंगे। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन हमने ऐसा भी देखा था कि टर्निंग पॉइंट्स निकालो, राइट। तो सबसे पहला काम किसी भी मेथड में टर्निंग पॉइंट्स का ही होता है। और हाउ टू फाइंड दिस, विल पुट y by dx equal to 0. Okay, so in without derivative type, we'll first understand nature of some functions. The first function that I have taken here is a function fx equal to x square. Although ये function क्या है इस डायग्राम को देख के हमें कोई जरूरत नहीं है, but what is the nature of this function? You can see here the minimum value of this function is this point. This is what the minima, and the minimum value is 0 because it is on x-axis. So I can say minimum value is 0 at x equal to 0. देखो मैक्सिमा है क्या, ये तो बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे x बढ़ा क्या होगा, y इंक्रीज होता जाएगा। तो इट हैज नो मैक्सिमा, क्रॉस लगाया मींस नो मैक्सिमा, नो मैक्सिमा। सेकंड फंक्शन में मैक्सिमम वैल्यू, देखो इस फंक्शन की इससे बड़ी वैल्यू नहीं है, बट मिनिमा की बात करते हैं तो ये नीचे जाते जाएगा। So you can say it has no minima but maxima है, maxima 0 है, तब at x equal to 0. Now you just pay attention on this function. This is the third function. x की वैल्यू बढ़ते जा रही है till what? Infinite. And कम कर रहे हैं तो कम भी हो रही है till what? Infinite. So it is maxima infinite पे जा रहा है, minima minus infinite पे जा रहा है। We'll say neither maxima nor minima, मतलब ना तो इसका maxima है ना ही minima है। The fourth function that I am having, you can see here, ये sin x का ग्राफ बना है। अच्छा, इन ग्राफ्स की बात कर सकते हैं हम। This is fx equal to minus x square. This is the graph of x cube. This is the graph of sin x. ये मैंने किसका ग्राफ बनाया बेटा? sin x का। अब sin x में आपको मालूम है मैक्सिमम वैल्यू +1 होता है, मिनिमम -1। आप बोल सकते हो सर ये 90 पे 1 है, एंड मिनिमम वैल्यू क्या हो गई? -1। तो इसका मैक्सिमा 1 है, मिनिमा -1 है। अब काफी सारे पॉइंट्स होते हैं जिसपे मैक्सिमा होता है और मिनिमा होता है। द लास्ट फंक्शन इज मॉड्यूलस फंक्शन। ये fx equal to mod x का ग्राफ बनाया है मैंने, fx equal to mod x। तो mod x फंक्शन में बेटा ध्यान रखना मिनिमम वैल्यू 0 होता है। 0 का तो डिपेंड करता है, ये mod x है तो at x equal to 0, एंड मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे नो मैक्सिमम, नो मैक्सिमम। तो इन सारे ग्राफ से एक चीज तो ये है जो हमें सिलेबस में जनरल क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं, उसमें हमें स्क्वायर फंक्शन है, क्यूब फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है एंड मॉड्यूलस फंक्शन है। कुछ बेसिक ग्राफ मैंने आपको बताए हैं। आफ्टर ऑब्जर्विंग दिस ग्राफ यू कैन आल्सो से सम फंक्शन इज ओनली हैविंग मिनिमा, सम इज ओनली हैविंग मैक्सिमा, सम इज हैविंग नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, सम इज हैविंग बोथ मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो देयर एनी फंक्शन कैन हैव एनी ऑफ द वैरायटी, maxima, minima, neither maxima nor minima. We'll see. Now in without derivative case, the first function we have 2x minus 1 का whole square plus 3. हमें बताना है it will have maxima or not, minima or not, at what point it is maxima, at what point it is minima, and what is the maximum value and what is the minimum value. So as I have discussed the various graph, I have also discussed the graph of x square. So just you can also remember one thing. X square is always from 0 to infinity. The range of x square is always from 0 to infinity. By using this result, you can solve this question. जैसे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्क्वायर फंक्शन है ना बेटा? स्क्वायर फंक्शन है तो हम लिख सकते हैं we know that ये जो 2x minus 1 whole square है, that is always from 0 to infinity. Infinity possible नहीं होता जो इक्वल नहीं लगाया है। Now यहाँ पे फंक्शन में 3 एक्स्ट्रा है, एडिंग 3 करा तो ऑल साइड ऐड होगा, ऑब्वियसली बात है। इन इक्वेशंस में प्लस या माइनस करने पे कोई चेंजेस नहीं आता है। Now 0 plus 3 is 3 and this is what the function, and infinity plus 3 is infinity. So you can see the minimum of this function fx ranges from
3 टू इंफिनिटी, इसका मिनिमम वैल्यू क्या है 3 है, मैक्सिमम वैल्यू इंफिनिटी मतलब मैक्सिमा नॉट नो मैक्सिमा वी कैन से मिनिमम वैल्यू इज 3, लोकल मैक्सिमा 3 यू कैन आल्सो से। अब ये 3 कब होगा, थोड़ा देखो ध्यान से, ये जब 0 होगा तभी तो 3 होगा, ये 0 कब होगा, जब 2x - 1 0 होगा, इस x 1/2 होगा। सो मिनिमा कब होगा, एट x = 1/2। और व्हेन आई टॉक अबाउट मैक्सिमम वैल्यू we'll say no maximum। In this question what is the difference with respect to the previous question? पिछले क्वेश्चन में परफेक्ट स्क्वायर था, जब भी क्वाड्रेटिक है हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। So first I will make it a perfect square, then as the previous question I will be doing it। Now how to make a perfect square class 10 में completing the square method भी था। Always take the coefficient of x square common, है ना, x square minus x plus 28/16 हो जाएगा ये, तो I am writing 7/4। Now second स्टेप में x के कोफिशिएंट को 2 से डिवाइड करते हैं ओरली। x का कोफिशिएंट 1 है, प्लस माइनस नहीं देख रहा हूं मैं, इसको 2 से डिवाइड किया 1/2, और 1/2 जो भी आया 2 से डिवाइड करने के बाद 1/2 आएगा ना, जो भी आ रहा है उसके स्क्वायर को प्लस और उसके स्क्वायर को माइनस कर रहा है। ये प्रोसीजर है बेटा परफेक्ट स्क्वायर बनाने। तो ऐसा करने पे जो फर्स्ट 3 टर्म है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे आपके, एंड लास्ट में 7/4 - 1/4 6/4 दैट इज 3/2। So I am multiplying by 16, this is 16 times x - 1/2 का whole square, this is 24। Now as the previous question square function is there, so what I will tell that we have x - 1/2 का whole square, ये बेटा हमेशा 0 से इंफिनिटी होगा। Now इस फंक्शन में 16 मल्टीप्लाई में है, so we are multiplying by 16, पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करने में साइन ऑफ एन इक्वेशन डज नॉट चेंज। सो 0 into 16 is 0, this is 0, infinity into 16 is infinity obviously। So next step I will be adding 24, so 0 plus 24 is less than equal to 16 times x - 1/2 का whole square plus 24 infinity। Here you can see this is the function, this is fx, and this is from 24 से infinity। ये तो फंक्शन था ना हमारा ये वाला। Now this function तुम बोल सकते हो कि सर इस फंक्शन की वैल्यू तो 24 से infinity है, so what is minima? Minima is 24। अब ये 24 कब होगा, obviously जब ये स्क्वायर 0 होगा। स्क्वायर 0 कब होगा, 1/2 पे। मैक्सिमा राइट नो मैक्सिमा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो अ स्क्वायर फंक्शन, थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे। x स्क्वायर तो होल स्क्वायर है, उसका कोएफिशिएंट नेगेटिव है, तो जल्दी से कर लेते हैं यहाँ पे। और वी नो x स्क्वायर या फिर कोई भी स्क्वायर फंक्शन है पॉलिनोमियल है ना बेटा, दिस इज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, और यहाँ पे माइनस है, तो आई एम मल्टीप्लाइंग बाय नेगेटिव साइन। कभी भी माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं, देखो भाई ध्यान से, साइन चेंज हो जाता है, राइट। सो आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज माइनस इंफिनिटी इज लेस देन माइनस x - 1 का स्क्वायर इज लेस देन 0, प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी हो गया ना, कैसे नेगेटिव का मल्टीप्लाई करवाया है। नाउ एडिंग टू all sides, 2 को ऐड कर रहे हैं, because there 2 लिखा है, minus infinity plus 2 is less than minus x plus 1 का whole square plus 2 is 0 plus 2, so this is minus infinity, this is the function, this is plus 2। now this function you can say कि sir ये function तो हमें ऐसा बोल रहा है, it is ranging from minus infinity से 2, means इसका maximum value क्या है, मैक्सिमा 2 है। अच्छा ये 2 होगा कब,
जब ये स्क्वायर फंक्शन 0 होगा, so you can say at x equal to 1. Now minima, we will say no minimum. कोई मिनिमा नहीं है, मिनिमम वैल्यू माइनस इन्फिनिटी दिख रहा है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज x cube plus 1. नाउ एज वी हैव ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड कि x cube का तो ना मैक्सिमा होता है ना मिनिमा. x cube इज नाइदर हैविंग मैक्सिमा नॉर मिनिमा. सो वी कैन राइट वी हैव दिस x cube is from minus infinity to plus infinity. सॉरी इक्वल लिया है, तो प्लस 1 ऐड करता हूं. इंफिनिटी प्लस 1 इंफिनिटी होगा, ये भी माइनस इंफिनिटी होगा, प्लस 1 कर देता हूं. दिस इज माइनस इंफिनिटी, दिस इज द फंक्शन, दिस इज प्लस इंफिनिटी. सो आई विल राइट नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. Now next question is sin 2x plus 5. So the value of sin is from minus 1 to plus 1. So you can say minus 1 plus 5 कितना हो जाएगा 4, 5 plus 1 कितना हो जाएगा 6. You can directly say सर 4 to 6 होगा, minimum 4 होगा, maximum 6 होगा. How to write it? You can also write it by, we know that sin 2x, sin theta always is from minus 1 to plus 1. अब function में plus 5 ऐड है, adding 5 all sides. So minus 1 plus 5 is less than equal to sin 2x plus 5. 1 plus 5. This is 4. This is the function, and this is 6. Function ranges from 4 to 6. 4 to 6 है, तो इसका मिनिमा क्या होगा? मिनिमा और मैक्सिमा 6, मिनिमा 4 हो जाएगा. मैक्सिमम वैल्यू प्लस 6, minimum value plus 4. Next question is minus of mod of x plus 1 plus 6. देखो मॉड्यूलस फंक्शन का I have already told this mod is from 0 to infinity. Now you can see सब प्लस ऐड होगा, नेगेटिव का मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाइंग बाय minus 1 all sides. So minus 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन ऑफ द इक्वेशन विल चेंज. माइनस इंफिनिटी से बेटा माइनस ऑफ x प्लस 1 हो जाएगा, दिस इज 0 है ना. देन एडिंग 3 ऑल साइड्स, माइनस इंफिनिटी प्लस 3, माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 प्लस 3, 0 प्लस 3. so this is minus infinity, this is the function, and this is 3 equal नहीं आएगा यहाँ. so we can say minima not possible, maxima is 3. maxima क्या होगा 3, कब होगा 3 at x equal to minus 1. okay. फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ऑब्वियसली द नेम फर्स्ट ऑर्डर मतलब से सिंगल dy by dx निकालेंगे, और बाय ऑब्जर्विंग द dy by dx यू कैन इजीली टेल सर इस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा और इस पॉइंट पे मिनिमम. एक चीज तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, टर्निंग पॉइंट्स यू हैव ऑलरेडी फाइंड इट. इन टर्निंग पॉइंट पे आइदर यू विल बी हैविंग मैक्सिमा और यू विल बी हैविंग मिनिमा. अब ये पता करना है कि एट विच पॉइंट इट विल बी मैक्सिमा, एट विच पॉइंट इट विल बी मिनिमा. जस्ट ऑब्जर्व हियर in this diagram. By observing the diagram you can say this P1 point is local maxima. अब इस P1 point को ऑब्जर्व करो, इस P1 point पे फंक्शन पहले इंक्रीजिंग हुआ फिर डिक्रीजिंग. आर यू गेटिंग और नॉट? पहले इंक्रीजिंग है और फिर डिक्रीजिंग है. एंड रिकॉल द कांसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx पॉजिटिव होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए dy by dx क्या होता है? नेगेटिव. This plus and minus is for dy by dx. If I take this minima point, function is first decreasing then increasing. पहले decrease हो रहा है फिर increase हो रहा है. So decreasing के लिए dy by dx negative and increasing के लिए dy by dx positive. सारे maximum point पे positive increasing से decreasing होगा और सारे minima point पे decreasing से increasing होगा. तो हम लिख सकते हैं अगर dy by dx का साइन positive to negative change हो रहा है तो local maxima है. And if it is changing from negative to positive, you will have local minimum.
We'll also have absolute maxima, absolute minima. We'll understand that concept at that time because कोई particular formula नहीं है. और second order higher order derivative test को भी हम देखेंगे. As I've already discussed the concept that at for maxima the sign of dy by dx changes from plus infinity to minus infinity, and for minima the sign of dy by dx changes from negative to positive. What we'll do in the question, we'll first find the turning point, and with this summation we'll be checking, we'll be find that that point is of local maxima and that point is of local minima. Now the first question we have, fx equal to x cube minus 3x. Every time we'll be doing differentiation, first derivative. If I take this dy by dx, I will write dy by dx. Let it at y, so 3x square minus 3. For the first step, for turning point, this dy by dx is 0. So 3x square minus 3 is 0. x square 3x square equal to 3. 3 से 3 कैंसिल हो गया. x square equal to 1. और x square 1 है तो बेटा x क्या होगा प्लस माइनस. x square 1 है तो x प्लस माइनस 1 मींस प्लस 1 और माइनस 1 टर्निंग पॉइंट है. अब किस पॉइंट पे मैक्सिमा होगा, किस पॉइंट पे मिनिमा होगा, ये चेक करना है हमें. देखो बड़ा आसान, बहुत आसान है. व्हाट विल बी डूइंग हियर ऑन नंबर लाइन, प्लॉट द पॉइंट -1 एंड +1. अब ध्यान से देखना, दिस नंबर लाइन आई एम ड्राइंग फॉर dy by dx, मतलब मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे इसे चेक करना है. दिस इज 3 टाइम्स, यू कैन से x + 1 x - 1, 3 टाइम्स x + 1 x - 1, या तो डायरेक्ट ले. अब क्या तरीका है चेक करने का, +1 से बड़ी कोई भी वैल्यू पुट करो, एक रैंडम वैल्यू. तो इफ आई +2, सपोज मैं 2 रख रहा हूं, क्या चेक कर रहा हूं 2 पे. सो 2 पे चेक करा, 2 पुट करा, 1 2 + 1 3 एंड 2 - 1 1. तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी. तो आई एम मार्किंग हियर प्लस साइन. अब -1 से +1 के बीच में एक वैल्यू ले लो, 0 ले लो, सीधा 0 रख दिया. 0 रखने पे 0 हो जाएगा. 0 - 3 is -3, so this is negative. देखो इन बिटवीन कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, जैसे मैंने 0 लिया, आप 0.5 ले लो, कुछ भी लो इन बिटवीन. लेस देन -1, लेस देन -1 के लिए सपोज आई टेक -2. तो -2 रखने पे 3 * -2 + 1 -1, then -2 plus -1 -3. So you can see negative negative positive means you will be false. अब ये साइन मार्क कर दिए. अब देखो ध्यान से, एट x इक्वल टू -1, ये dy by dx की लाइन है. -1 पे साइन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. dy by dx चेंजेस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव में मैक्सिमा होता है, मिनिमा होता है, मैक्सिमा. This is at x equal to 1, dy by dx changes from positive to negative, so maxima at x equal to -1. And at x equal to 1 plus 1 पे negative to positive है बेटा, dy by dx changes from negative to positive, so we will say minima at x equal to +1. अब बात है सर वैल्यू क्या होगा. सो बेटा जिस पॉइंट पे मिनिमा आया है, मैक्सिमा है, उसे पुट कर दो आप फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा. जिस पॉइंट पे मिनिमा आया है, उसे पुट कर दो फंक्शन में, यू विल गेट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव fx equal to sin x plus cos x. Now in this question, as every time we'll be doing, I always let y dy by dx, sin x का डिफरेंशिएशन cos x का माइनस sin x. Now we need to find the turning points. तो टर्निंग पॉइंट के लिए क्या करते हैं बेटा, इक्वल टू 0 कर देते हैं. इक्वल टू 0 करने के बाद cos x इक्वल टू sin x, cos x इक्वल टू sin x. कब होता है इसके बीच में, या तो आप बोल सकते हैं cos से डिवाइड करें तो 1 इक्वल टू tan x. tan x 1 कब होगा, 45 पे. और भी पॉइंट्स होते हैं बट हमें इस इंटरवल में देखना है. Now 45 हमें टर्निंग पॉइंट आ गया. तो व्हाट विल डू, विल ड्रॉ अ नंबर लाइन. 0 से 90 के बीच में है बेटा,
और बीच में एक पॉइंट आ गया 45। अब आपको बस इतना देखना है dy by dx, इसका साइन क्या चेंज हो रहा है। तो व्हाट इज dy by dx? दिस इज dy by dx। नाउ हाउ टू डू? आप एक काम करो, इससे बड़ा एक पॉइंट ले लो, सपोज 45 से ज्यादा 60 होता है, मैंने 60 लिया एट x इक्वल टू 60, दिस dy by dx, 60 का cos 60 1/2 and sin 60 √3/2. So you will have 1 minus √3/2, 1 minus 1.866/2 means you are getting less than 0, negative here. यहाँ पे वैल्यू रखते हैं 30 रख लो, कोई भी वैल्यू रख सकता है, मैंने बोला dy by dx cos 30 √3/2 and sin 30 1/2, you will see you are getting a positive value. So dy by dx changes from positive to negative. So positive से negative में क्या होता है? Maxima. Maxima कब होगा? At x equal to 45 degree. And maximum value? What do? You put the value, जो भी वैल्यू है फंक्शन में पुट करो, sin π/4 plus cos π/4, sin 45 1/√2, cos 45 1/√2, 1/√2 plus 1/√2 is 2/√2, 2/√2 is √2, √2 is the answer. Now the last question of this variety is fx equal to x root 1 minus x. First thing we always do, dy by dx f dash x, first function, second function, first function differentiation of second, रूट का 1/2 रूट और 1 minus x का करेंगे तो -1 प्लस सेकंड फंक्शन रूट 1 minus x, x का डिफरेंशिएशन 1, I am taking LCM 2 root 1 minus x, x into -1 is -x, 2 times 1 minus x, so you will have ultimately 2 minus 3x upon 2 root 1 minus x. Now if I put it to 0, you will get x equal to 2/3. The turning point, ये क्या है बेटा? टर्निंग पॉइंट है। अब इस टर्निंग पॉइंट पे मैक्सिमा होगा या मिनिमा होगा? सो विल ड्रॉ अ नंबर लाइन, 2/3 रखा। अब देखो इस फंक्शन को, ऑब्वियसली फंक्शन 1 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर 2/3 से बड़ी कोई वैल्यू रखी मैंने, and you see, just see here, we'll put a value less than this 2/3. तो ना x greater than 0 है, तो 0 से बड़ी वैल्यू ही लेना है हमें, और we'll take 0.66 के पहले 0.4 ले लूं मैं, और एक बार x equal to 0.7 या 0.8 ले लेंगे। तो 0.4 में यहाँ पुट करता हूँ, तो 2 minus 3 into 0.4 upon 2 into 1 minus 0.4, numerator 1.2, numerator is positive, denominator is positive, so you are getting plus sign. 0.7 पे 2 minus 3 into 0.7 upon dy by dx को चेक कर रहे हैं हम, 2 into 1 minus 0.7, this is negative, this is positive, negative upon positive is negative, so dy by dx is changing its sign from positive to negative for maxima, so maxima हम बोल सकते हैं at x equal to 2/3। अब वैल्यू क्या होगी? वैल्यू के लिए हमें इस फंक्शन में पुट करना पड़ेगा, सो मैक्सिमम वैल्यू f2/3 is 2/3 root 1 minus 2/3, this is 2/3 into 1/√3, this is 2 upon 3 √3. Okay, so I hope this first order derivative test is clear to all of you. Now let's understand the pattern of absolute maxima and absolute minimum. First, the varieties of questions. How you will identify the question is of absolute maximum or absolute minimum when it is not given. Question will be having a closed interval, and it will be asked find local maxima, local minima, or absolute maxima, absolute minimum. Like in the first order derivative test,
विल फर्स्ट फाइंड द टर्निंग पॉइंट। सबसे पहले क्या करना है, टर्निंग पॉइंट करना है हमें, फाइंड टर्निंग पॉइंट। नाउ द सेकंड थिंग, स्टेप 2, टर्निंग पॉइंट निकालने के बाद ऑब्वियसली टर्निंग पॉइंट क्या होंगे, दिस विल बी द टर्निंग पॉइंट x1 एंड कैन से द सेकंड टर्निंग पॉइंट x2। ये दो टर्निंग पॉइंट आ गया। You will in the function you will put the turning points and the corner points, और इन चारों पॉइंट्स में से जो भी वैल्यू मैक्सिमम होगी उसे आप बोल देना मैक्सिमा, और जो भी वैल्यू मिनिमम होगी उसे क्या बोल देंगे, मिनिमम। जनरली तो हम टर्निंग पॉइंट निकालते हैं। इसका सिंपल सा मतलब इस सेक्शन में फंक्शन की मैक्सिमम क्या है, अगर ग्राफ से ऑब्जर्व करूंगा तो आप बोलोगे सर दिस इज द मैक्सिमम, और मिनिमम ये नहीं है, दिस इज द मिनिमम। यू कैन से सर मैक्सिमा आपका आ रहा है ए पे क्या आ रहा है, मैक्सिमा, एंड मिनिमा किस पे आ रहा है, x1, राइट। तो क्लोज इंटरवल में एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा में हम यही करने वाले हैं। फर्स्ट विल फाइंड द टर्निंग पॉइंट एंड विद द टर्निंग पॉइंट एंड द कॉर्नर पॉइंट विल पुट ऑल द वैल्यूज इन द फंक्शन। जो भी वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी उसे मैक्सिमम बोल देंगे, जो भी मिनिमम मिलेगी उससे मिनिमम होगा। तो थिंग इज सर बाकी सारे में ऐसा क्यों नहीं करते, क्लोज इंटरवल है, अगर ओपन इंटरवल है तो वी कैन डू दिस। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ वी आइडेंटिफाई क्लोज इंटरवल। we'll first find the turning point. I am letting it at y, I am finding dy by dx of f dash x into 4 probability, 4x का differentiation 4 and this x square का 2x हो जाएगा। So you will have, when you will put it to 0, turning point के लिए 0 से इक्वेट करेंगे ना, तो आपका x क्या आ जाएगा। अब मैंने क्या बोला है आपको, फंक्शन में कॉर्नर पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट तो रखना ही है, कॉर्नर पॉइंट्स भी रखना है, -2 and 9/2। तो करो आप 4 into 4 minus 4 square by 2, 4 into -2 minus 2 square by 2, 4 into 9/2 minus 9/2 का whole square by 2। Just see here, this is 16, 16/2, 8, तो 16 में से 8 या 8, here -8, 4/2 is 2, this is -10, third is 18, this is 81/8, so 18 minus this is 10.01, so this is approximately 7.9. Now you can see here, sir, this is the minimum value we are having, and the maxima, this is the maximum. So we can say at x equal to 4 we have maxima, and x equal to -2 we have minimum value. Now the second question we have x plus sin 2x. We do dy by dx, cos derivative 1 plus 2 cos 2x. The first thing that we are going to find, turning point. Turning points के लिए क्या करेंगे, we'll put f dash x equal to 0. So 1 plus 2 cos 2x is equal to 0. So you will get cos 2x as -1/2. So cos 2x -1/2 कब होगा, इस पूरे इंटरवल में देखना पड़ेगा हमें। So cos 2x equal to -1/2, so we can say this 2x will be, अब होता है -1/2, भाई cos नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में, +1/2 at these four angles. This is the value of 2x. बहुत सारे आगे भी होंगे, हमें 0 से 2π देखना है x के लिए। So x belong to π/3, 2π/3, then 4π/3, and then this is 5π/3. तो इन सारी वैल्यूज पे हम निकालेंगे फंक्शन f of 0, the first point, π/3, next is 2π/3, next is 4π/3, next is 5π/3, and the next is 2π. Let's see क्या वैल्यूज आ रही है हमारी।
So after putting all these value in the function fx equal to x plus sine 2x, you will have these values. So by observing these values, you can say 0 is the minimum value. और देखो बेटा लास्ट में 2 पाई विल बी द मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि ये सारी वैल्यू 2 पाई से कम है और नेगेटिव माइनस सब्ट्रैक्ट हो रहा है. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू. सो वी कैन से फॉर दिस फंक्शन this will have minima 0 at x equal to 0, maxima 2 pi at x equal to 2 pi. So this absolute maximum and minimum topic is completed. Thank you.